So if you are a beginner, I would suggest you to do it. It's easier than code forces in the sense that the problems are standard and it will teach you a lot. And the best part is कि हर Saturday कोई contest होता है. मतलब I'm excluding regular and grand contests. So there is a beginner contest in AdCoder which happens every Saturday at around 5:30 p.m. and it's a really good way to start your CP journey अगर तुम लोग first year or second year, right? Anyway, so I think you guys can go read the question for now. And we'll start in some 2-3 minutes. प्रॉब्लम बढ़ गया सब प्रॉब्लम समझ आया सबको एंड n is less than 20 तो what is the constraint which is optimal for n is less than 20? 2 to the power n. So like I said, 2 power 10 is 1024, 10 power 3. 2 power 10 is 10 power 3. 2 power 20 would be 10 power 6. 10 power 6 iterations in 1 second. Right? So we are expecting a solution of the form O of n या O of 2 power n या O of 2 power n into n. बराबर? So how do you go about this solution? Any idea? रिकर्जन कैसे मतलब ठीक है रिकर्जन से कर सकते हैं
Exactly. So to sum things up, पहले अरे को देखो. So I'll give an example. Right? So then you have something like 157, right? So first thing is, अगर मैं सारे possible combinations ढूंढ पा रहा हूँ in which I can divide this array, then I'll just calculate for all these possible combinations what is the answer that they require us to calculate, which is the XOR of all these. So I'll just calculate that function for each and every possible partition of the array that I can make, right? And then उसके बाद I'll just take the minimum of all the answers and that is my final answer. For example, you have 157, right? 157. क्या क्या partitions है इसको break करने के लिए? You have 1, you have 5, you have 7. ये एक partition होगा. या तो you have 1 and then 5, 7. या तो you have 1, 5 and then you have 7. Right? ऐसे you can have, I guess, at least 8 partitions. 8 भी नहीं. हाँ. You just have 1, 5, 7 only. बराबर. Is there anything I missed out here? नहीं ना? You can have only these 4 possible partitions. बराबर. So how do I represent each partition? Think about it. So I could do something like, to take this number, इसके बीच में I put a 0 or 1. इसके बीच में I put a 0 or 1. 1 indicating कि these two numbers are joined, 0 indicating कि these two numbers are not joined. समझा? तो this number is basically 0, 0. Both of these are not joined. This number is 0, 1. This is 1, 0. This is 1, 1. Does it make sense? So abhi what I did, I just converted intervals का problem into subsets. So now all that I need to do is I'll iterate through these. And iterating through these is very simple. For example, तुम लोग consider कर रहे होगे कि you have some sort of 1, 5, 7 एक array. How do you even generate all these partitions? Right? You would have been confused about that. कि मैं ठीक है, मतलब मेरे को पता है I need to do this. But how do I get about generating these partitions? That's the tough one. You need to use some sort of a recursion or something like that. But उससे better you can have something very clean like this. You just put a 0 in case that 1 is not connected to 5. I mean 1 and 5 are not the same integer. You put a 1 if they are in the same integer. बराबर? So now all that you need to do is iterate over subsets. So what are the possible values? This is 0, this is 1, this is 2, this is 3. मतलब I'll just iterate from I is equal to 0 to 2 to the power n minus 1. Right? N is 3 here. 2 to the power 2, 4. So I runs from 0 to 4. 0, 1, 2, 3. For हर एक I will generate this array. Generating this array is very easy. समझा? Generating this is pretty easy. Once you have this. Because अगर 0 है तो you will just add a new array with the new element. अगर 1 है तो previous array में ही add कर दो. For example, I have 0, 1, let's say. Right? So how do I generate the array? I first add 1. फिर मैं अगले element पे गया 5. And then I see कि 0 है. मतलब इसको मैं separate कर दूंगा. I add 5 here. I see a 1. अगला element 7 है. मतलब 5 and 7 are connected. So I have this. I generated this. Just from this number. Right? So the number is just an easy way of representing all these intervals that you form here. हाँ मतलब it is basically used just for subsets. But in this case, I think intervals be broken down. Intervals can also be broken down for this. So that is the idea. Right. So अभी ये question हो जाएगा, है ना? Once you have this, what do you need to do? You just need to go into each of this array. You will take the OR of them, and then go into OR XORs of this. I guess that is what the or XORs in the. I mean whatever. So I think वो वाला पार्ट हो जाएगा, है ना? Once you have this problem. तो
So are we clear on this one? If it is not visible, we can see the whole thing I've done here. Right? तो ये वाला पार्ट भी हो गया and इसमें मतलब questions हैं but trivial है like I said. So once you know to convert the problem into bit sets, करना तो वही है जो question में दिया है, you just have to brute force it. But using bit sets is just a very easy way of brute forcing because now एक for loop लिखना है बस, एक for loop से problem हो गया, एक for loop लिखना है मतलब इधर तो for loop लिखना ही है, but हाँ instead of this you could have been thinking about recursion की ये इसको consider किया consider नहीं किया उसके लिए वापस दो function डालो and it goes on like that which is a little bit time consuming to think I guess. तो हाँ तो shall I move on to the next topic है ना done. हाँ तो a general tip is if you see n is equal to 20 be happy and इसका complexity क्या होगा brother? n into 2 power n. Do you guys understand where the n into comes from? n कहाँ से multiply हो रहा है? Because subsets तो इससे generate कर दिया, but then you'll have to iterate to each subset and then find the right. अभी आते हैं DP. तो कितने लोगों को DP पहले से आता है? कितने लोगों को नैपसैक फिबोनाची जोड़ के डीपी आता है एंड कितने लोग डीपी से डरते हो मतलब पैरेंट मैं भी डरता था तो द पॉइंट इज कि डीपी में आई डिड नॉट इंक्लूड एनी थियरी बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि डीपी कैन नॉट बी लर्न्ड बाय थियरी प्रॉब्लम करके सीखना पड़ेगा दैट इज नो अदर थिंग. I just use some tips जो कि काम आ सकते हैं तुम लोगों को कहीं ना कहीं फ्यूचर में कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट के ओए में था वैसे पढ़ लो तो हाँ ओके तो we'll see the problem right. So for people who don't know what DP is याद है हमने प्रीफिक्स सम का प्रॉब्लम किया था. You have 1, 2, 3 and 6. Right. अब prefix of I is basically sum of all these elements. So if you go about brute forcing the whole thing, तो अभी इधर के एलिमेंट के लिए you will run a for loop and then you will do this. You will do the sum. तो इधर 6 आया. इधर के लिए you will do the sum again. Right. इधर के लिए 12 आया. तो ऐसा करते जाओगे तो इट इज गोना टेक O of 1 plus O of 2 plus O of 3 plus O of 4 1 plus 2 plus 3 plus and so on. This is n into right. तो अगर नई वे से ये प्रीफिक्स सम अरे सिमुलेट किया तो दैट बिकम्स O of n square. Prefix sum का array का ith element is basically sum of all these elements. If you are going to naively construct this array, then it's going to take O of n square. But one smart way to do this is pref of I is ai plus pref I minus. How is this smart? Because essentially इधर तक तो हम already compute कर चुके हैं. We have already got the answer to this. तो इसका आंसर you are using here and this basically becomes this plus इसका this plus इसका यही है इतना ही है राइट. इसी को हम काफी प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं बट DP in its basic crux is this. You are using something that you have already memorized to solve a new problem and you are basically optimizing things बस. तो डीपी का बेसिक मतलब समझ आया ना सबको. तो अभी लेट्स गेट टू सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स राइट. तो अभी डीपी वाले में भी मैंने इजी मीडियम हार्ड का टैग लिखा होगा बट लाइक कंफ्यूज मत हो जाना. डीपी के लिए वो इजी है, may not be actually easy. Like for someone who has not done DP उतना it might not be easy. But हाँ, I wrote the tags from the perspective कि DP के लिए
अच्छा ठीक है, I never gave you guys time to study. One more question. And also lecture का pace कैसे है? हमें running fast या हमें going correctly? Good. कोई प्रॉब्लम किया है पहले से? क्या बिना डिग्री का क्या करके क्या फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ना, मतलब हाँ यू आर राइट कि निकालना है, मतलब इज इट पॉसिबल टू अनलॉक या नहीं, दैट इज पॉसिबल, बट मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालना? क्वेश्चन समझा? एटलीस्ट क्वेश्चन समझ आया ना? सो हाँ, आई एम वार्निंग अगेन, तो ये डीपी का प्रॉब्लम है, तो आई थिंक इट माइट बी इंटिमिडेटिंग, बट हाँ थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव कि कुछ नया सीख रहे हैं, आई बेट इट विल बी गुड. तो ट्राई टू अप्लाई द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी यू नो कि n 12 है, तो इट्स समहाउ 2 पावर n इश समथिंग है ना. यू नोटिस कि m 10 पावर 3 है, एंड m कैरफुली 10 पावर 3 दिया है. 2 पावर n इज गोना बी क्या 20484096 है ना, 5000 के आसपास. 5000 के साथ m को मल्टीप्लाई करें तो दैट समहाउ बिकम्स 5 into 10 पावर 6. तो अप्रोक्सीमेट कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कुछ m into 2 पावर n. Are we on the same page? So this is how you decode कि कैसे कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम का. तो नाउ यू हैव अ फर्स्ट हिंट कि कुछ 2 पावर n के टर्म्स में 2 पावर्स के सोचना है, एंड देन उसमें हर एक m में आइटरेट करना, समथिंग लाइक दैट. व्हाट डू यू हैव हियर? यू हैव कि शॉप का हर एक शॉप, मतलब शॉप सेल्स m कीज, एंड हर एक की का एक कॉस्ट है, एंड देन इट कैन अनलॉक bi बॉक्सेस, राइट. तो जो बॉक्सेस अनलॉक होगा दैट इज ऑफ द फॉर्म ci1 ci2 ci3 एंड सो ऑन ci. मतलब हर एक बॉक्स के लिए तो फॉर हर एक बॉक्स i के लिए यू विल हैव टू स्टोर ai. ये हो गया उसका कॉस्ट.
फिर एक वेक्टर ci1 ci2 cin तो ये वेक्टर स्टोर करना पड़ेगा तुम लोगों को हर एक बॉक्स के लिए। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया स्टोर करने के लिए? मतलब इसको मैं कुछ बेटर वे में स्टोर कर सकता हूँ पहली बार। हाउ कैन आई डू दैट? यू नोटिस कि हर एक ci is between 1 and n, right? हर एक ci is between 1 and n. मतलब for an example, if n is 12, तो ci would be some sort of 1, 4, 6, 11. तो ये सारे बॉक्सेस को मैं खोल सकता हूँ. That is what this means. तो can I store this in some easy way? I'll use a bitmap. So I'll generate a bit with 12 zeros. उसमें I'll set मतलब मैं हर एक नंबर को पहले -1 कर दूंगा just for simplicity की 1 के लिए I'll set the 0th bit to be 1 क्योंकि एक बिट वेस्ट हो रहा है ना वरना। Like do you guys understand? या फिर समझो कि ऐसा नंबर तो I'll set the first bit to be 1, I'll set the 4th bit to be 1, 6th bit to be 1, 11th bit to be 1. तो for हर एक box I'll now store ai, let's say xn. पहला implementation simplification, right? So अभी things become easy. So are you clear so far? I have just stored this in another way which is very easy for me to process. वरना हर एक बार वेक्टर प्रोसेस करना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा. So now what do you have as an input? You have ai, xi. xi is the subset of boxes that I can open using the key I, right? अभी let's go towards solving the problem. तो अगर हम ये implementation ना करते तो हाँ मतलब it would be a little bit difficult to store things and everything. तो finally C++ जो Python देख के थक गए थे. I'll open this in VS Code because it will be easy to right. So yeah, right. So हाँ. So what have I written पहले? So what did we discuss? M into 2 power n is the expected complexity, right? तो उसके हिसाब से I was taking off a dp state. तो मेरे को मिला dp of n into 1 less than 12. N is your m here. I have defined n to be 1001. So m is basically your m here, right? So dp state हमने define किया dp of m, 1 less than 12, 1 to the power 12, sorry 2 to the power 12, right? अभी what have I defined the dp to be? I have defined dp of ij is the minimum cost to consider a subset I from the first j boxes. मतलब अभी तक मैंने first j boxes consider किया, right? First j boxes मैंने consider कर लिया, and then अभी तक मैं I subset को generate किया. अभी तक मैं j boxes consider किया, and अभी तक मैं I subset को generate किया. What do I mean when I generated I subset is, तो essentially पहले तो एक step और मैं भूल गया. So let's say you have 5 boxes, right? So let's say box 0, box 1, box 2, box 3, box 4. 5 boxes हैं हमारे पास, right? And we have some data like एक key है जिसका cost 3 है, जो कि ये boxes को खोल रहे. दूसरा key है जिसका cost 5 है, which is opening ये boxes. Right? मेरे पास 2 keys हैं. I have one key which opens the second, third and fourth box. I have one key which opens the first, second and third box. So you can notice कि मैं सारे keys भी use कर लूँ, I can never open the 5th box. So my answer is always going to be -1. So exact strategy क्या है? How do I say if the answer is -1 or not? Like इधर मैंने बोल दिया. You take the OR of all these numbers that you just generated, right? इन सबका और तो easily हो जाएगा because you store it as a decimal. So you take the OR
and then you check if all these bits are set. सारे bits set होना चाहिए. And checking this is same as इस number में एक add कर दो. If you add 1 to this number, you basically get this. Right. So if you add 1 and then if you check if this is equal to 1 less than n, that is basically the same as checking if सारे bits are set up. Just a simple trick. समझा ये? Checking if all bits are set is same as adding 1 to this number and then checking if this number is equal to this. नहीं समझा तो ठीक है, सारे bits पे जाके check कर लो, that is fine. Right. So ये पहला केस हुआ when you are checking for a -1 or 1. Right. So this is what I have done here. I have basically computed the total OR of all numbers, and then total plus 1 is not equal to 1 less than n. That basically means कि सारे bits set नहीं, right? अभी let's go to the DP, right? So what I'm doing is कि मैं अभी तक so I'm constructing this answer one by one. So what I'm trying to do here is, it's actually hard to explain. Okay. So मैं ये answer में I'm trying to simulate this answer one by one. Right. अभी मान लो I have opened these boxes so far. मैं कुछ keys consider किया so far. I've considered J keys so far. Right. Remember how हमारे prefix वाले DP problem में we took an intermediate state. हम prefix of J पे गए थे and then we said कि prefix of J is AJ plus prefix of J minus 1. Right. ऐसे ही take an intermediate state here. Right. Take some intermediate state here. इस state में you say कि अभी तक मैं मान ले कि I have considered 2 keys so far. And अभी तक I have generated this subset. मतलब ये सारे को मैं खोल चुका हूँ अभी तक. ये सारे बॉक्सेस को I've opened so far. अभी I am considering the third key, right? Third key को मैं मेरे पास दो choices हैं third key के ऊपर. I can either consider the third key या I can not consider the third key. अगर मैं third key को consider करूँगा और इसके लिए cost का dp of let's say x, ये state को मैं x बोल रहा हूँ तो इसके लिए cost का dp of x, right? अभी I am going to the third key. मेरे पास choice है कि मैं third key को consider करूँ या ना करूँ, right? If I am considering my third key, what will be the new subset of the boxes I have opened? How will I update them? अभी तक मैं ये सारे खोल चुका हूँ. I'll take an OR, right? Third key का मान ले you have another key जो कि fourth box and मतलब fifth box and second box खोल रहे हैं. तो अभी तक I've considered, okay, so this is a bad example but हाँ, तो अभी तक मान लो I've considered these two keys, right? तो अभी मेरा subset हो जाएगा this, अभी तक मेरा subset हो जाएगा this and अभी तक मेरा cost हो गया 8, तो dp of x will be 8. दो keys मैं consider कर चुका हूँ, अभी तक मैं ये सारे boxes खोल चुका हूँ and इसके लिए मेरे को cost लगा 8. And अभी I am considering the third key. Third key is this. This is your third key. Third key consider करने के बाद, how is the DP state getting updated? I will add the cost of the third key to this that I already had. Right? I'll do something like this to update the DP ka cost. And how is the state getting updated? I'll take an OR with this thing. 1 0 0 1 0. Take a minute to digest what I have just said here. Does this make sense? समझ आ रहा है? जैसे कि prefix में मैंने memorization use किया था, पहले के computed values को I just used it to find the next value, right? This is already pre-computed. तो इसको मैं use करके I'm generating this. समझा? And then what do you want finally? You want कि finally मैं ये subset generate करता हूँ. The subset with all ones. And इस subset के लिए minimum cost क्या होगा? That is what you are trying to find. Right. So I'll reiterate again. What is your dp of I? Your dp of I is the minimum cost
when you have considered I keys so far, अभी तक I keys consider कर ली है, and you have opened the subset J. अभी तक you have opened the subset J. So J is a subset. इसीलिए it is of the power 1 less than 2. Instead of J you could have used a vector. So ये DP state is same as saying 2, 4, 3, 2, 1. Meaning कि मैं ये सारे boxes खोल चुका हूँ. I have considered the first 2 keys. ये सारे boxes खोल चुका हूँ. इसको represent करने का एक सेक्सी तरीका है 2, 0, 1, 1, which is basically 2, what is this number? 15. समझ आया? Good so far. And how do you update each transition? So get to this part. This is where I am updating each transition. So what am I doing here? I have 2 choices. First thing is that I do not consider this key at all. Right? So I'm just moving just my I. So मैं ये key को मैं use नहीं किया. So I'm going from solve of I, j to solve of I plus 1, j, keys. My j remains the same. The subset is not getting updated. But since मैंने एक key consider कर लिया, I'm updating my I. I'm setting it to I plus 1. तो जिन्होंने भी knapsack किया होगा वो यही है. This but in a fancy manner. मतलब this is knapsack but in a fancy manner. Right? The second thing is when I consider that key. When I consider that key, then I am adding my keys of I dot first. My keys of I dot first stores the cost. I am adding the cost that I need to consider that key, and I am also updating my j with the mask. Right? समझा? So this is the transition, and then how do I check the base case? I check कि अगर मैं ये reach हो गया तो I am all good. अगर मैं ये reach कर पा रहा हूँ तो I will return 0. क्योंकि इसके बाद कुछ cost नहीं है. I have already considered all the subsets of boxes. मतलब मैं सारे boxes को open कर चुका हूँ. तो इसके बाद कुछ cost है क्या मुझे? नहीं ना. तो I will return 0. समझा? That is the base case that I have done there. If I equal to m, that is also a fancy way of saying कि सारे keys consider कर चुके हैं. When you have considered सारे keys, I want my subset to be equal to 1, 1, 1, 1, 1. That is, I want j plus 1. So this is basically saying that my subset is equal to 1, 1, 1, 1, 1. This is just a fancy way of saying that. And then मैं एक e power 12 इसलिए multiply किया हूँ because I want to give it a penalty in case that is not the case. ये सब छोड़ो, but basically what I'm doing is I'm just checking if this is equal to 0 and I'm giving it a 0. So if this is equal to this subset and I'm giving it a 0. बराबर? That is what I'm doing here. मतलब तुम लोग वो equation को you can consider it to be an if else and then you can see if I plus 1 equal to 1 less than n, if all the bits are set, then you will return a 0. If all the bits are not set, then that expression will become a 1, in which case you will return e power 12. E power 12 is just like a penalty कि cost को minimize करना है मुझे, but अगर ये case हुआ तो cost minimize नहीं होगा. You are adding a very large number to the cost. So essentially your program will not consider this case at all. समझ रहे हो? But it's not going to happen anyway because I've already taken care of the condition of -1. I've already taken care of the -1 condition. तो जब j is equal to m होगा तो पूरा सबसेट तो होगा ही. अच्छा नहीं, there are cases that नहीं होगा अगर मैं सारे keys को ignore कर दिया. So if I'm ignoring सारे keys, या if I'm ignoring कुछ keys, so for example वो e power 12 का मैं significance बताता हूँ. Let's say I consider these 2 keys. Third operation में I did not consider this key. I did not consider this key. तो मेरा final subset बनेगा this. इसका cost है 8. ये सबसेट बनाने का cost है 10. Right? This is what I want. ये सबसेट मुझे चाहिए. इसको बनाने का cost है 10. And then ये सबसेट है, इसको बनाने का cost है 8. दोनों में I have used 3 keys. तो technically मेरा ये चुन जाएगा ना, क्योंकि if I have exhausted all keys, if I return a 0 plainly, तो I be considering the first case. But ये तो गलत है क्योंकि इसमें सारे सबसेट सेट नहीं है. तो मुझे एक पेनाल्टी रिटर्न करना था इस केस के लिए. तो
तो इस केस के लिए आई एम डूइंग समथिंग लाइक 8 प्लस ई पार्ट ले अब सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो अगर सबसेट सारा सेट नहीं है तो यू आर एसेंशियली गिविंग अ वेरी लार्ज नंबर ताकि ये मिनिमम में आए ही नहीं. और सारे सबसेट सेट हैं तो वेल रिटर्न इज 0. सो इन दिस केस यू विल बी रिटर्निंग 10 प्लस. तो ये आंसर विल बी 10. समझ आया ये? आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन. तो your answer is basically solve of 0, 0, which means कि अभी तक you have not considered any keys. अभी तक you have not opened any boxes. The subset of boxes you opened so far is 0. The keys you have considered so far is 0. अभी से you are going into the solve loop. उसमें जाके you are considering every key one by one. You have a choice for each key कि उसको consider करो या ना करो. Consider करेगा तो your subset will update. Consider नहीं करेगा your subset will not update. बराबर? And finally I get my answer. तो हाँ, this was an easy DP in the sense अगर DP आता है पहले से तो easy है. अगर DP नहीं आता है तो फिर क्योंकि this is just a basic variation of knapsack with bit sets, right? Bit sets में मैं कुछ manipulation नहीं किया हूँ. I just use bit sets to store this in a very fashionable way. और कुछ manipulation नहीं किया हूँ मैं bit sets में. एंड बाकी सब तो पूरा knapsack ही है, कंसिडर या नॉट कंसिडर, बस इतना ही है. ऑफ कोर्स इट्स हार्ड टू कम अप विद द आइडिया बट इम्प्लीमेंटेशन इज इजी. या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि एआई हमारे पास है और हर एक का हमारे पास बिटमैप है. तो अगर एआई को हम पहले सॉर्ट कर लेंगे, फिर हर एक एआई के लिए एक्स को इनके साथ और करेंगे. अगर इनका कोई भी अपडेट हो रहा है तो उस बीट की जगह हम एआई लिख देंगे. नहीं अपडेट करा तो पुराना मतलब दूसरा हो ही रहेगा. बट सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिनिमम कॉस्ट आएगा. मतलब अपडेशन भी हो रहा है ना, वैसे मिनिमम कॉस्ट वहां से नहीं आ रहा है. और मैं समझा नहीं क्या है. मतलब एक पहले हमारा सारा 0 है 12 बिट्स और हमारे पास एआई सॉर्टेड ऑर्डर में है और एआई का हमारे पास बिटमैप है. ठीक है. तो हम एआई की जो बिटमैप है उसके साथ इनका और करेंगे. ठीक है. अगर कोई बिट इनका अपडेट हो रहा है तो उसके जगह हम एआई लेंगे क्योंकि उस मतलब डेटा को खोलने का यही हमारा मतलब लीस्ट पॉसिबल मतलब कॉस्ट. ओके एक सेकंड रुको. आई जस्ट डिस्प्ले द अगला प्रॉब्लम व्हिच विल बी द लास्ट प्रॉब्लम. वो तुम लोग तब तक पढ़ लो. तब तक आई विल कम टू दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे. मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है एंड थोड़ा सा हार्ड भी है. तो इफ यू गाइस फील कि इट विल बी हार्ड फॉर यू गाइस कैन लीव, बट हाँ अदरवाइज इट्स अ गुड प्रॉब्लम.
मतलब तुम लोग सोल्यूशन देख सकते हो इसका, या तो अगर सारे ही चिल लोग बैठने के लिए डिनर के लिए तो फिर आई कैन डिस्कस। अगर मतलब आई थिंक 10-15 मिनट तो लगेगा, तो इफ यू गाइस वांट टू गो एंड हैव डिनर इट्स फाइन, बताओ कुछ, बट अंडर द कंडीशन कि तुम लोग जाके सॉल्व करने का ट्राई करोगे, बिकॉज दिस इज अ रियली गुड प्रॉब्लम एंड मतलब सोल्यूशन भी काफी सिंपल है। You guys can see my submission इसके लिए। तो है तो ये कुछ 2000 या 1800 rated Apple पे, which is like 2100 समझ लो CF पे, but it is definitely a very easy, मतलब once you get the logic it's a very good fish, but हाँ I think you guys can go and try it out at your own pace, and अगर कुछ doubts आए तो you can always contact, right? Done?